Hello friends and welcome to the Hindu editorial discussion. You are watching Adda247 and I am Saurabh Day. My dear friends, as daily we have this session. Today also we have got some extremely important articles, interesting articles, and the articles which are related to your regular life. My dear friends, if we take a look at all of these three, they are definitely going to give you a really nice view of the importance of the Hindu editorial and also what you must know about when you face comprehension, close test, para-jumbles and descriptive section. Let's take a look at today's first article. So guys, today's first article is about intellectual property. आप सभी को पता होगा जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप जो है आपसे परमिशन सीक करती है. आई एम श्योर दैट यू गाइज वुड बी अवेयर दैट व्हेनेवर यू डाउनलोड एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन योर सेल फोन, दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन सीक्स परमिशन ऑफ योर फोटोज एंड वीडियोज एंड गैलरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट माय डियर फ्रेंड्स, is that data protected? क्या गारंटी है कि वो जो एक्सेस आप दे रहे हो अपने फोटोज को, अपने वीडियोस को, वो उसको यूज नहीं करेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा बेस आज का पहला आर्टिकल होने वाला है. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. So guys, today's second article is about the Kurdish vote. I am sure that आपको पता होगा जब ISIS से पूरी दुनिया जो है डर रही थी, जब ISIS बेगुनाहों को इराक और सीरिया में मार रहा था, तो ISIS को खौफ खिलाने के लिए Kurdish महिलाएं soldiers आगे आई थी. So my dear friends, when the whole world was fearing and running away from ISIS, it was the women soldiers of Kurdish origin, or rather the Kurdish women soldiers who were actually, who were hitting the ISIS back and hitting them hard. So my dear friends, today's second article is based on the Kurdish vote of independence. Let's take a look at the next one, the last article. And guys, today's last article is about the privacy quandary. I'm sure देखो क्या है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि iPhone X लॉन्च हो चुका है. Okay, how many of you, before I tell you about this, how many of you have this want to buy iPhone X? बताओ भाई, कितनों को चाहिए iPhone X? अगर मुझे एक बहुत ही बढ़िया रीजन मिला आपको iPhone X देने का, तो I will gift you an iPhone X. Okay. Now anyway, well iPhone X में देखो अलग अलग क्वालिटीज हैं और उसमें से एक सिक्योरिटी फीचर ये भी है फेस अनलॉकिंग वाला. दैट इज ये फेस को देख करके, किसी भी यूजर के फेस को देख करके अनलॉक कर सकता है, अपने आप को अनलॉक हो जाएगा. लेकिन माय डियर फ्रेंड, लेट्स जस्ट से इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग, मान लेते हैं कि आप जो है सो रहे हैं और आपके पास iPhone X आ भी गया है, तो आप हरगिज नहीं चाहेंगे कोई और आपका फोन यूज करे, राइट? लेकिन मान लेते हैं कि आप सो रहे हैं और आपका भाई या आपकी बहन आपकी शक्ल के सामने आपका आईफोन रख करके उसे अनलॉक कर लेता है, उसके बाद त्राहिमाम मचा सकता है आपके आईफोन को लेकर. सो गाइस, देयर आर सम प्राइवेसी इश्यूज रिगार्डिंग द iPhone X एंड वी शैल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन डिटेल इन टुडेज आर्टिकल. लेट्स टेक अ लुक and go back to our first article and discuss that in detail. So guys, the first article today is India needs to push for a new deal. Now my dear friends, let me just tell you something that I told you earlier, that you guys must be knowing that whenever you download a particular application, that particular application wants access and seeks your permission to use certain areas, to use certain things in your phone, right? Now that actually is your intellectual property. It can be clubbed under your intellectual property, and your intellectual property, my dear friends, is at risk over here. India needs to push for a new deal, all right? और ये जो नई डील है, यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के भारत को थोड़ी सख्ती दिखानी होगी और साथ ही में कुछ नई चीजें अपनानी होगी. सो इंडिया नीड्स टू पुश हार्डर एंड गेट सम न्यू थिंग्स. ओके, now global trade and intellectual property are at crossroads or critical discussion at a critical decision making point.
ओके, अब देखा जाए भाई तो ग्लोबल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये दोनों के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और ऐसे रास्ते पे आके ये दोनों मिल रहे हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर फैसला लेना और अच्छा और दृढ़ फैसला लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो ग्लोबल ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर एट अ क्रॉस रोड एंड अ डिसीजन इज रिक्वायर्ड, अ क्रिटिकल डिसीजन इज रिक्वायर्ड एट दिस सर्टेन पॉइंट. Now, in a time when multilateral consensus is languishing or lagging on a large number of issues, the Trump administration is considering pulling the US out of the most free trade agreements on the ground that it needs a more favorable environment as for its companies and its people. अब देखा जाए भाई तो इस टाइम पे पूरी दुनिया भर के परमिशन, यानी देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में अलग अलग चीज़ों को लेकर जो है परेशानियां हो रही हैं। कोई किसी का ट्रेड में कुछ दिक्कत आ रही है तो किसी और के ट्रेड में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन इसी ट्रेड की दिक्कतों के बीच में अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट है वहां पर, वो जो है ये चाह रहे हैं कि उनकी कंट्री के जो कंपनियां हैं वो एक से एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से बाहर आ जाए। और इसके लिए वो तर्क ये दे रहे हैं कि मेरी कंपनियां जो है गलती से फंस गई इन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में और मेरी कंपनीज जो है बेटर डिजर्व करती हैं, मेरे लोग बेटर डिजर्व करते हैं। So my dear friends, at a time when there are multilateral consensus which are lacking on a lot of issues, the US President Donald Trump, all of a sudden he just woke up one fine day and now he is saying that the companies of USA, the American companies, must be pulled out of free trade agreements because on the grounds that Donald Trump believes that the people of his nation and the companies of his nation deserve better deals. All right, अब आगे देखते हैं यहाँ पर. Now, what the next thing is, much will be written about the carnage as far as jobs, wages and national sovereignty that the current American onslaught on trade deals brings to the fore. अब देखा जाए तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग तरीकों की वजह से जो जॉब्स को नुकसान पहुंच रहा है, जो लोगों की डेली वेतन को नुकसान पहुंच रहा है, जो यूएसए का एज एन इमेज नुकसान पहुंच रहा है, खासकर जो अलग अलग कंपनियां हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से, इस पर हम लोग बात करेंगे फिर कभी. So all the harm and all the harms and all the harms that is actually happening because of the policies of Donald Trump, as far as the harms to jobs is concerned, as far as the harms to the national sovereignty of America is concerned, etc. We'll discuss all about that a little later. Now, over here, my dear friends, here the author focuses on a critical issue, how trade deals are becoming the new Trojan horse to ensure stronger patent protection and continued profits to global companies. अब देखा जाए यहाँ पर जो बात होगी, my dear friends, यहाँ पर बात ये होगी कि ये जो ट्रेड डील्स होती हैं देश और कंपनी के बीच में, इस प्रकार से कैसे करके ये जो कंपनियां हैं ये देशों में अपना हक जमा ले रही हैं और खास करके और लगातार जिंदगी भर के लिए अपना प्रॉफिट शुरू कर ले रही हैं. Now my dear friends, I remember what happened in the late 17th century, I suppose, when the British Captain Hawkins arrived and he sought the permission of the Mughal emperor for starting the business, and slowly and steadily the East India Company established and ultimately took over and became the power center of the British India. But my dear friends, something like that is happening in a modern way these days. These days what happens is the foreign companies, they arrive and they deal with the government, and because of that deal, suddenly all of a sudden the government realizes a few years later that all of the information of its people is flowing to that company and actually is getting the profits to the global companies abroad. अब देखा जाए भाई तो जहां तक बात है, देखो भाई आप लोगों को पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, और कह तो ये रही थी कि वो व्यवसाय करने आई है, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था. तो उसी प्रकार से देखा जाए तो आजकल क्या होती है, जो कंपनियां आती हैं ये भी गुलाम बनाती हैं लोगों को और देशों को, लेकिन कुछ अलग तरीके से. ये कंपनियां आती हैं, देश के साथ समझौता करती हैं और उस पर्टिकुलर समझौते के साथ यहां पर क्या होता है, वो सारा जानकारियां जो भी यहां पर किसी देश के लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, उन जानकारियों को इस्तेमाल करते हुए ये कंपनियां लगातार प्रॉफिट यहां पर पा रही होती हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ वी हैड गॉट 2 टफ वर्ड्स. मैं चाहूंगा आप उनको लिख लीजिए, उनको टाइप कीजिए. क्रॉसरोड्स इक्वल्स टू
critical decision making point. Come on guys, type this thing. Crossroads equals to critical decision making point. And then languishing मतलब basically जो पीछे रह जाए, ठीक है भाई. Languishing equals to lagging. Languishing equals to lagging. Come on guys, type this thing over here. Languishing equals to lagging. बहुत बढ़िया. नाउ प्रॉब्लम विथ ट्रेड डील्स. अब कई लोग सोचेंगे कि सर हो सकता है अगर कंपनियां जो है ट्रेड डील ना करेंगी सरकारों के साथ तो शायद जो है और दिक्कत हो सकती है, तो आपको परेशानी क्यों है ट्रेड डील्स के साथ. नाउ सम पीपल माइट हैव द क्वेश्चन ओवर हियर दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ ट्रेड डील्स ओवर हियर. वेल, a bit about the historical trajectory of events. The agreement on trade-related aspects of intellectual property rights embodied an international regulatory regime for the first time in 1995. 1995 में इसको समझा गया था कि कंपनियां जो है किसी भी देश के लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर सकती है, और इसीलिए उस वक्त जो है द अग्रीमेंट बेसिकली एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक संस्था बनाई गई थी. So my dear friend, in 1995 it was believed, and it was actually believed, rather understood, that trade companies can actually harm the people of a particular country using or rather misusing their intellectual property, and that's why an organization called the Trade Related Aspects of Intellectual Property of Rights was established. Rather, it was kind of a regulatory regime. ठीक है, ये एक तरह का regulatory regime है. Now, although it represented a major compromise for most developing countries, it was only the starting point for many other nations which have since then promoted excessive protection of private investor interest through bilateral trade companies, often at the expense of wider public interest. तो देखा जाए तो कहने के लिए तो ये बोला गया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर यहां पर रिजाइम बनाया गया है. लेकिन हुआ क्या, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, देखो क्या मैं बताऊं, इसके दो मुख्य बिंदु थे. पहला बिंदु ये था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंपनियां हैं वो ज्यादा पर नहीं फैला सकती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका पूरा एरिया जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपनीज के शिकार के लिए ही है. So guys, basically if I want to summarize this particular trade related aspect of intellectual property rights, this was something like this, that the area of the developing countries was for the ball of the developed countries' companies, whereas the area of the developed countries was actually taken away and protected from the companies of developing countries. So something like this was happening over there. Now, corporate libertarians or believers in free will, riding high on increased market power, continue to lobby their governments for absolute protection of intellectual property rights of corporations. अब देखा जाए भाई तो कुछ ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, कंपनीज हैं, वो जिस कंट्री से बिलोंग करती हैं उस कंट्री के सरकार को अक्सर जो है अपने साथ जो है अपने काबू में रखती हैं, और जो सरकारी पॉलिसीज होती हैं उस पे पूरा हक जमा करके कहां उनको प्रोटेक्शन चाहिए, कहां उनको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, इन सब का ख्याल रखती हैं. सो इनफैक्ट द लार्ज एमएनसीज विच आर देयर इन आवर वर्ल्ड, विच एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, they keep full control of the country's government to which they belong to, and make sure they exercise their rights for protection whenever they need that. Now before I go to the questions, मैं चाहूंगा जो यहां पर एक important word है libertarians, आप इसका meaning लिखें. Libertarians equals to believers in free will. Libertarians equals to believers in free will. Well done, Monali. Now let's take a look at question number 1 and 2. So guys, here are the spotting errors for the day, question number 1 and 2, and start answering them. 30 seconds guys, hurry up. बताओ क्या जवाब होगा. Okay, 30 seconds नहीं, 45 seconds. चलो, time starts now. Now answer. बताओ क्या जवाब होगा. $30 seconds left, people. Hurry up. What's the answer? Last 20 seconds, people. Hurry up.
10 seconds more. Hurry up. Okay. Now guys, here your question number 1 and 2. Question number 1 में देखो लिखा हुआ था, much will be written about the carnage as far as jobs, wages and national sovereignty that the current American onslaught on trade deals brings to the show. And option statement 2 over here says, corporate libertarians riding high on increased market power continue to lobby its governments for absolute protection of intellectual property rights of corporations. Now it's time to take a look at the correct answer, and the correct answers are, well, my dear friend, for question number 1, the correct answer is in part number 4. For question number 2, the correct answer is in part number 3. अब ऐसा क्यों है? देखो भाई, ऐसा इसलिए है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए तो पार्ट 4 में गलती है. क्यों? क्योंकि वहां पर श्योर की बात नहीं, वहां पर 4 की बात हो रही है. 4 मीन्स टू ब्रिंग फॉरवर्ड, ऑलराइट, सामने लेके आना. तो यहां पर उसकी बात हो रही है, ठीक है. वेयर श्योर मीन्स किनारा, ठीक है. तो श्योर उनका मतलब किनारा होता है, तो वहां मतलब उसका कोई बैठता नहीं है. यहां पर हमें टू ब्रिंग फॉरवर्ड या सामने लेके आने का मतलब चाहिए था. ऑन द अदर हैंड, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो लॉबी इट्स गवर्नमेंट्स ना होकर के लॉबी देयर गवर्नमेंट होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लिबर्टेरियंस, प्लूरल लिबर्टेरियंस, राइट, फॉर देम, सिंस इट्स प्लूरल दैट्स व्हाई वी शुड से लॉबी देयर गवर्नमेंट्स, ना कि लॉबी इट्स गवर्नमेंट्स. तो उम्मीद करता हूं पहले का क्वेश्चन फर्स्ट वाले का आंसर 4th है, सेकंड वाले का 3rd है. आप लोगों ने सही जवाब दिए होंगे एंड योर स्कोर्स वुड हैव रीच्ड 2 on 2 for sure. If it's not 2 on 2, even 1 on 2 is also a nice score. I can see a lot of new people have joined us. Well, welcome everyone. Now let's take a look at the article number 2. So guys, here's the article number 2 for all of you. It's called the Kurdish vote. अब देखो भाई, जब ISIS पूरी दुनिया को डरा रहा था, बेगुनाहों को मार रहा था, बेगुनाहों को सरकलम कर रहा था, उस वक्त the Kurdish forces, which comprised mainly of women, they were the ones who were fighting tooth and nail and also defeating ISIS in various areas. All right. So now, my dear friends, this is regarding the freedom of the Kurds. Iraqi Kurdistan's decision to go ahead with the proposed independence referendum, despite strong opposition both from within and outside Iraq, has created a regional political storm in West Asia. अब देखा जाए, देखो क्या चीज है, ये जो कर्डिश ओरिजिन के जो लोग हैं, जो कर्दिस्तान वाले लोग हैं, ये जो है ना, ये अलग अलग देशों में फैले हुए हैं. इराक में भी एक स्टेट है जिसका जो कि कर्दिस्तान करके है. अब कर्दिस्तान जो है वो ये चाहता है, वो कुछ दिनों बाद एक रेफरेंडम करा रहा है, और उस रेफरेंडम में वो ये तय करना चाहता है, उस रेफरेंडम में वो ये बेसिकली तय कर देगा क्या वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता है या फिर वो इराक के साथ ही कंटिन्यू करेगा. अब इस बात को लेकर के देखा जाए तो पूरे वेस्ट एशिया में बवाल मचा हुआ है. Now guys, what's happening over there in West Asia is that, you know, in Iraq's Kurdistan, they are actually conducting a referendum, and this referendum, you know, they are basically conducting this referendum to fix that whether should they have a separate state of Kurdistan or should they remain under the Iraqi government. And this particular referendum is, you know, it's actually causing a political storm in West Asia. Now, let's understand more. The Iraqi Supreme Court has already asked the Kurdistan regional government to suspend the vote. However, since I told you guys, देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है वहां पर. There is actually a storm going on in West Asia. तो जो इराक की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कर्दिस्तान की जो रीजनल गवर्नमेंट है कि आप इस तरह का वोट ना कराएं, इस तरह का रेफरेंडम ना कराएं. ये 25 सितंबर को होना था, और जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इराक ये तय ना कर ले कि ऐसा वोट कराना लीगल है कि नहीं, तब तक आप इसको ना होने दें. So the Iraqi Supreme Court has already asked the Kurdistan regional government to suspend this referendum, which is scheduled for which is scheduled for September 25, till its legality is settled by the Iraqi central government. All right. Now, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi has threatened to use force if the referendum turns violent. अब इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर इस रेफरेंडम में थोड़ी सी भी हिंसा हुई तो वो बेसिकली बहुत ही सख्ती के साथ पेश आएंगे और वो फोर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करेंगे.
Now, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi, he has threatened, that he shall be using force if this referendum of Kurdistan turns violent. Now, the Turkish government has ordered a military drill on the Iraqi border, while Iran has also issued a warning. अब देखा जाए भाई तो सिर्फ एक रेफरेंडम की वजह से आप समझ सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया बहुत इंटॉलरेंट है, सिर्फ एक रेफरेंडम की वजह से जो कि उनके देश में है भी नहीं, टर्की जो है मिलिट्री ड्रिल करवा रहा है इराकी बॉर्डर पे, और साथ ही में ईरान ने भी जो है वार्निंग जारी कर दी है. नाउ for some people who think India is extremely intolerant, they should they should take care over here. They should have a look at this. For a referendum which is not even happening in their own nation, the Turkish government has ordered a military drill on the Iraqi border. And then, and this particular even Iran has issued a warning. I hope guys कि इतना तो आप लोग समझ ले होंगे. Neha Damia, you are attending the lecture from office. Well done. Now, let's understand more. Such opposition is largely driven by fears that a yes vote in referendum, which is almost certain, would enhance the nationalist aspirations of Kurds living in other countries and further destabilize the region. अब देखा जाए यहाँ पर भाई तो सब लोग ये अचानक से एक रेफरेंडम से, कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या है इस रेफरेंडम में. इस रेफरेंडम से देखा जाए तो वेस्ट एशिया इसलिए डरा हुआ है, वेस्ट एशिया के जो दिग्गज हैं वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मान लेते हैं अगर कर्ड जितने भी हैं उनका डिसीजन यहाँ पर यस हो जाता है तो जो अलग अलग देशों में ये कर्ड्स फैले हुए हैं वो सब काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं अलग अलग देशों के लिए. So now guys, the people in West Asia, rather the legends in West Asia, the so-called legends of West Asia like Iran and Turkey and Iraq, they actually fear that if the Kurdistan referendum ends in a yes vote, which most probably it would, then it's going to enhance the nationalist aspirations of Kurds which are scattered in various countries of West Asia. Now, अब आगे देखते हैं. Besides Iraq, Kurds, the fourth largest ethnic group in West Asia, but without a state, are scattered various countries including Turkey, Iran and Syria. अब देखा जाए भाई इराक के अलावा जो कर्ड्स के बेसिकली जो कर्दिस्तान यानी कि कर्ड ओरिजिन के लोग हैं, ये वैसे देखा जाए तो ये फोर्थ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है वेस्ट एशिया में, लेकिन देखा जाए तो इनके पास इनकी अपनी कोई कंट्री नहीं है. कुछ कर्ड्स जो है इराक में रहते हैं, कुछ टर्की में रहते हैं, कुछ ईरान में रहते हैं, तो कुछ सीरिया में रहते हैं. Now guys, what's happening over here is that besides Iraq, the Kurds, which are the fourth largest ethnic group in West Asia but don't really have an independent state, are scattered in various countries like Turkey, Iran and Syria. I hope guys कि इतना आपको समझ में आया है, because जब क्वेश्चंस आएंगे तब अगर आप गलत जवाब देंगे तो आप मुझसे मत कहिएगा कि सर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था. Now anyway, in Turkey, Kurdish rebels are involved in a protracted civil war, while in Syria they have established a regional government. अब देखा जाए तो टर्की में देखा जाए तो टर्की को इतनी प्रॉब्लम क्यों है कर्ड से, वो इसलिए है क्योंकि जो कर्डिश रेबल्स हैं वो बहुत जमाने से सिविल वॉर करते आ रहे हैं टर्की के साथ, क्योंकि टर्की वाले चाहते हैं कि उनको गुलाम बना के रखें और कर्डिश चाहते हैं ऐसा ना हो. ओके, तो इसीलिए अब देखा जाए तो ऑलरेडी टर्की काफी प्रॉब्लम झेल रहा है. और जहां तक सीरिया की बात है तो सीरिया में तो उनके पास एक सिविल गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी एक रीजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी हुई है. So in Turkey what's happening is that that the Kurdish rebels are involved in a very long civil war, while in Syria the Kurdish people have established a regional government. Now they are all keenly awaiting the outcome of the Iraqi vote. अब जितने भी कर्ड्स हैं जो कि अलग अलग देशों में फैले हुए हैं और जिन देशों में ये फैले हुए हैं वो देश भी इंतजार कर रहे हैं कि इराक के इस रेफरेंडम का फाइनल रिजल्ट क्या होता है. So the Kurdish people who are there and who are scattered in various countries along with the countries in which they are scattered are waiting for the result of this referendum which is going to happen in Iraq. Now, a yes vote doesn't necessarily mean that the Iraqi Kurdistan would immediately break away from Iraq. Both the regional government in Erbil and federal government in Baghdad are not ready for that. अब देखा जाए
तो अगर यहां पर कुर्दिस्तान के लिए यस भी हो जाता है फॉर अ सेपरेट नेशन, इससे कुछ ऐसा नहीं होगा कि अचानक से इराक का एक हिस्सा अलग हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से अलग होने के लिए जो कुर्दिस्तान की जो रीजनल गवर्नमेंट है वो भी रेडी नहीं है और जो इराक की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी रेडी नहीं है. Now, even if the referendum ends in a yes, still the Kurdistan is not going to become a separate country out of Iraq and get separated from Iraq. It's not going to happen. And even the people of the Kurdistan, the regional party of Kurdistan, even that's not ready for the same. And neither is the central government of Iraq. उम्मीद करता हूं गाइस कि इतना आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा. अगर बैठ गया है तो बहुत बढ़िया बात है. बट बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड. मैं चाहूंगा इसका मीनिंग आप लोग यहां लिख लीजिए. प्रोट्रैक्टेड इक्वल्स टू लॉन्ग. प्रोट्रैक्टेड इक्वल्स टू लॉन्ग. प्रोट्रैक्टेड इक्वल्स टू लॉन्ग. खाना वाला लॉन्ग नहीं, लंबा वाला लॉन्ग. चलो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 3. ओके, so which of the following is true according to the passage? अभी हमने जो यहां पर पैसेज देखा, बताइए इसका सही जवाब क्या है. Your time starts now. Hurry up guys, 30 seconds. $20 seconds more people. What's the answer? Hurry up. Last 10 seconds, guys. What's the answer? Quickly. Last 5 seconds, people. Hurry up. Come on, guys. What's the answer? What's the answer? Hurry up. Well, the time is up now. See, statement A is Iraqi Kurdistan's decision to go ahead with a finalized independence referendum has created a regional political storm in West Asia. Statement B says the Turkish government has ordered a military drill on the Iraqi border, while Iran has also issued a warning. Now, then statement C says in Turkey, Kurdish rebels are involved in protracted civil war, while in Syria they have established a regional government. Now, guys, let's take a look at the correct answer, and the correct answer is, well, guys, it's option number 4, only C and B. Now, the majority of you, 99% of you, have given a wrong answer, and I believe that happened because the majority of you were involved in talking to each other and not listening to this particular article carefully. Now, statement A, it's written Iraqi Kurdistan's decision to go ahead with the finalized independence referendum, whereas my dear friends, in the previous slide when I explained it to you, it was proposed independence referendum. स्लाइड में बात हो रही थी प्रपोज्ड इंडिपेंडेंस रेफरेंडम की, और यहां पर देखा जाए तो बात हो रही है फाइनलाइज्ड इंडिपेंडेंस रेफरेंडम की. और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली सी एंड बी. तो इसीलिए मैंने कहा था आपसे, अगर आप चाहते हैं कि आप सही जवाब दें तो ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूं आपको. Now guys, अब देखो, if you want to read more about article 1 and article 2, then you can use the Hindu editorial PDF link which is given in the description of this video. Now let's understand and take a look at the article number 3. So guys, here's the article number 3. It is the privacy quandary. Now, well, this is regarding the iPhone X. If an iPhone user unlocks the phone on an average 80 times a day, as an Apple executive reportedly revealed to the media last April, it does make sense to make the process of unlocking a breeze without compromising on security. अब देखा जाए भाई तो तकरीबन obvious है कि जो भी, if I ask you guys, if I ask you that how many times do you use your phone? Come on guys, tell me. एक दिन में आप कितनी बार इस्तेमाल करते हो अपने फोन को? क्या आप मुझे बता सकते हैं? Can you tell me the number? How many times do you use your phone? Well, let's just say if an iPhone user uses his particular phone 80 times in a day, then he should be able to open its security lock without any problems and right away at a moment. Okay. अब देखा जाए यहां पर जो आईफोन यूजर है, अगर कहने का मतलब ये है कोई भी आईफोन यूजर अगर एक दिन में 80 बार अपना फोन यहां पर खोल रहा है
अपना फोन अपना खोल रहा है अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए, तो हो सकता है, तो बेसिकली हो क्या सकता है, तो उसको बिना किसी झिझक के जो है अपना फोन फटाक से खोल लेना चाहिए बिना किसी टाइम लगाए. नाउ ओके, वेल द थिंग इज इट डज मेक ओके देन Touch ID, a fingerprint recognition feature introduced 4 years back, made punching in passcodes seem like a lot of work. अब देखा जाए तो टच आईडी जो इससे पहले बहुत ही तगड़ा बेसिकली स्कैनर माना जाता था, सिक्योरिटी माना जाता था, तो वो बेसिकली जब आया तो तब से पंच कोड जो है बेसिकली जो कोड होता है, जो एंटर कोड होता है, कोड एंटर सिक्योरिटी कोड जो होता है, उसको बहुत ही पुराने जमाने की चीज उसने तभी बना दिया था. सो व्हेन टच आईडी अराइव्ड, इट एक्चुअली मेड पंचिंग कोड्स अ हिस्ट्री राइट अवे. Then now with Face ID, with Apple, which Apple will introduce in its upcoming Phone X as a replacement to Touch ID, you need to only glance at the phone to be able to access it. It's that easy. और अब देखा जाए तो जमाना और भी मॉडर्न हो चुका है, और अब जमाना इतना मॉडर्न हो गया है कि आईफोन X जो एप्पल यहां निकालेगा वो आपका थोबड़ा देखकर अपने आप को खोल लेगा और बोलेगा आओ भाई बताओ क्या तुम्हें आज हमारे सामने पेश किया जाए. So the thing is that the new Apple iPhone X is going to be so modernized that it doesn't even have the Touch ID. It'll just look you in the face and right away open itself for you to access itself. In the meantime, a lot more people are joining us. Well, welcome everyone. We're talking about Apple iPhones right now. So that's the thing. Well, it won't be fooled by photos or masks of you, assures Apple. लेकिन अगर कोई और आपके थोबड़े का इस्तेमाल करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके किसी फोटो से आपका फोन नहीं खुलेगा और ना ही आपकी शक्ल जैसे मास्क लगाकर आपका फोन खुल सकता है. So if someone else tries to unlock your phone using your own photograph or a mask which is shaped like your face, then that will not work, and this has been assured by Apple. Okay, that's because the technology relies on making a unique facial map by projecting 30,000 invisible dots on your face. और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका थोबड़ा जैसे ही आपका फोन देखेगा एप्पल आईफोन एक्स, तो आपके थोबड़े पे वो इनविजिबल 30,000 डॉट्स बना देगा. कुछ लोगों से जिनसे एक दो पिंपल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं, अगर उनको बता दिया जाए कि उनके चेहरे पर आईफोन एक्स जो है 30,000 इनविजिबल पिंपल बनाने वाला है, तो शायद उनको थोड़ा सा अजीब लग जाए. Now anyway guys, well the thing is that this iPhone X is going to project approximately 30,000 invisible dots on your face so that it's able to identify you. Now well, I hope guys कि इतना दिमाग में आपके बैठ गया होगा, समझ में आ चुका होगा. अब आगे देखते हैं. This pattern of dots is read by an infrared camera which then sends the data to a secure part of the chip to make a match. अब देखा जाए तो आपके थोबड़े पर ये 30 इनविजिबल डॉट जो कि बनाए जाएंगे, ये डॉट जो है इसको रीड करेगा और बेसिकली एक इंफ्रारेड कैमरा रीड करेगा इसको, और फिर वो इंफॉर्मेशन आगे भेज देगा, फाइल आगे भेज देगा अगले डिपार्टमेंट को, जो कि एक चिप की होगी, और वो चिप मैच करेगी. सो अच्छा, आई डिडंट नो कि यहाँ पर आईफोन के अंदर भी सरकारी काम होता है, क्योंकि पहले आपका चेहरा जो है डॉट से कौन नापेगा, क्या इंफ्रारेड कैमरा नापेगा, और उसके बाद आपके चेहरे की फाइल जो है मूव हो जाएगी आगे चिप के पास, और फिर वो मैच करने का प्रयास करेगा. नाउ what's going to happen is that these 30,000 dots are actually it's going to be read by the infrared camera, which is then going to send that data to a secure part of the chip, which is going to make a match. अच्छा, अब आगे देखते हैं. The image never goes out of the device. Apple is supremely confident when it says, put on glasses, wear a hat, grow a beard. Your friends might not recognize you, but iPhone X will. तो देखा जाए भाई, ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो थोबड़े की इमेज होगी वो आपके आईफोन एक्स के दिल में उतर जाएगी. और जैसे ही देखा जाए तो यहां पर एप्पल के जो चचा लोग हैं, एप्पल के चचा लोग ये कह रहे हैं कि आप चाहे चश्मा लगा लें, चाहे आप टोपा पहन लें, चाहे आपकी दाढ़ी निकल आए, चाहे आप मंकी कैप पहन लें, आपके दोस्त आपको शायद ना पहचान पाए, लेकिन एप्पल आईफोन जरूर पहचान लेगा. सो गाइस, द थिंग इज दैट well, the people at Apple are really very interested in this, and they are saying that you can actually, they are really hoping a lot on this, and they are saying that you can wear glasses, you can wear a hat, you can grow a beard. Your friends might not recognize you, but Apple iPhone X will. Okay. Now, that's great news for security, but before you are done having a sigh of relief, it triggers an eerie or scary realization too.
what if all kinds of devices learn to recognize people? What would this mean for privacy? Face recognition technologies are becoming that mainstream. Well, अब अनुष्का शर्मा यहाँ पे पूछ रही हैं अंधेरे में कैसे करेगा आइडेंटिफाई। अनुष्का, इसीलिए मैंने कहा था ये इंफ्रारेड कैमरा यूज कर रहे हैं। वेल एनीवे, अब देखा जाए, यहां पर चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि थोबड़ा देखकर, अगर लेट्स जस्ट से कि थोबड़ा देख करके जो है यहां पर सब काम होने लगेगा, तो लेट्स जस्ट से कि आपके डोर पे नाउ गाइस, आई वांट यू टू इमेजिन, मैं चाहता हूं कि अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो कुछ चीजों को जो कि मैं आपको यहां बोल रहा हूं। इमेजिन करो कि आपके डोर पे, आपके घर के डोर पर एक ऐसे ही फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ठीक है। आपका थोबड़ा देख करके डोर अपने आप खुल गया, ठीक है। फिर आप अंदर आए, उसके बाद अंदर आने के बाद यूजुअली लोगों को प्यास लगती है, तो फिर वो गया फ्रिज के सामने और आपका थोबड़ा देखकर आपका फ्रिज भी खुल गया, आपका टीवी भी ऑन हो गया, आपका एसी भी ऑन हो गया, और उस वक्त चल रहा था सर्दी का मौसम। तो सोचो, गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसीलिए गाइस, नाउ द थिंग इज दैट okay, facial recognition technology is being enabled, that is good, but if all the things in our life will start using facial technology, then things might get a little scary. तो यहां पर वही बात यहां पर हो रही है गाइस। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको आइडिया यहां पर समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स जस्ट से ओके, some people who want a recap in English, for them I want to say, let's just say my dear friend, that it's winters as of now, and you were out somewhere, and then when you came back, your let's just say that there's a technology on your door, it read your face and the door opened itself. Then you came in, all of a sudden, then first of all what people usually do is that they go towards the fridge. Then after you came in, then you went towards the fridge, and recognizing your face, the fridge opened itself. Recognizing your face, the AC switched on itself, and recognizing your face, the television also switched on itself. फ्रिज और टीवी तो ठीक था, but all of a sudden in winters even the AC got switched on because it saw your face. So understand what's going to happen then. So that's why, my dear friends, facial recognition is cool, but every time it is not so cool, right? Now guys, let's take a look at question number, oh yes, right now we're gonna have a close test guys, and here comes the close test. So guys, question number 4 and question number 5 are right here for you. Tell me what's the correct answer. Time starts now. Hurry up, people. "20 seconds, people. Hurry up. What's the answer?" Okay guys, last 10 seconds. What's the answer, people? Hurry up. And 5, 4, 3, 2, 1. समय समाप्त हो जाता है आप सभी के लिए जवाब देने के लिए. Now it's my turn to do a quick recap, okay, of the question. So if an iPhone user unlocks the phone on an average 80 times a day, as an Apple executive reportedly reveals to the media last April, okay. And in question number 5 it says it won't be blank space by photos or masks of you. Well, my dear friends, it's time to take a look at the correct answers, and the sahi jawabs are, well, for question number 4, it's point number 2, that's your option number 2, revealed. And for question number 5, it's option number 5, that's no correction required. Ab obviously, bhai, reportedly, okay, if an iPhone phone user unlocks the phone on an average 80 times a day, as an Apple executive reportedly blank space to the media last April. अब देखो last April की बात हो रही है, right? That means it's in past indefinite, and in past indefinite we go with past with the second form of verb, revealed and opened and focused. यहाँ 3 ऐसे ऑप्शंस थे जो कि आंसर हो सकते थे. अब यहाँ पर सेंटेंस में ना तो ओपन सही बैठता, ना तो फोकस सही बैठता. ओपनड अप होता तो वो भी ठीक हो जाता. नथिंग इज मोर मैचिंग देन रिवील्ड, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. On the other hand, when it comes to question number 5, well, it won't be fooled. सबसे सटीक ऑप्शन है stupefied, foiled, dodged, opened. Opened हो सकता था, लेकिन
fooled is better. यहां पर थीम को देखते हुए fooled sounds better and that's why my dear friends we went with that. So उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपका स्कोर 515 जरूर पहुंच गया होगा. If it's not 515, even 415 like Koti Reddy is also a nice score. Now guys, it's time to take a look at the most interesting section of this session, which is the match the meaning, and here it comes for you. So guys, today I'm going to give you 60 seconds, and in 60 seconds guys, you have to match the meaning of all the words. If you are ready, get set, go. Time starts now. Start matching them. $50 seconds left. Hurry up guys. Last 40 seconds left guys. Hurry up. $30 seconds left. Hurry up. Come on people, come on. Last 20 seconds left. Hurry up guys. Last 10 seconds people. Hurry up. 5 seconds more. What's the answer guys? What's the answer? Okay, now can we have the correct answer please? Well guys, here are the answers. The meaning for libertarian is free thinker. The meaning for protracted is long. The meaning of eerie is scary. The meaning of crossroads is cross section. The meaning of languishing is lagging. And now it's a revision time, ladies and gentlemen. मैं यहाँ पर word का नाम बोलूँगा 2 बार और आपको उसका meaning यहाँ पर type करना है ताकि ये जो meanings हैं ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. Are you all ready for the revision people? Are you all ready for the revision? Okay, now meaning of libertarian. Come on guys, type the meaning of libertarian. बताइए libertarian का meaning क्या है? Yes, okay. Meaning of protracted. The meaning of protracted. Protracted का meaning क्या है? Yes, okay. The meaning of eerie. Eerie का meaning क्या है? Type the meaning of eerie. And yes, well done people. All right. The meaning of crossroads. The meaning of crossroads. क्या meaning है crossroads का? Yes, well done people. Okay. Now the meaning of languishing. Type the meaning of languishing. Languishing का meaning क्या है? And yes, it's lagging. So I hope guys that you had fun. You learned a lot of comprehension questions. In fact, rather, you were able to solve and the comprehension question correctly. You were also able to solve the glosses correctly. You were also able to learn the vocabulary words and play and enjoy the vocab quiz. तो चलिए इतना ही था आज के सेशन में. I hope that you had fun. Lot more sessions coming off of the Hindu editorial discussion. Keep watching Adda247 because with us, government job is right there in your pocket. Thank you.